Good morning, children. Now I am continuing the lesson Diwali. Okay, previous class children, I already done half of the lesson children. Now I am continuing the same lesson. Lesson number 6, Diwali. The festival of Diwali or lights. See children, before starting the lesson children, see the word meanings. See children, Tyohar. Tyohar means what? See, last class I already explained about that. What Tyohar means? Tyohar means festival. Tyohar means festival. See, in Hindi, another word for Tyohar is Parv, Utsav. Okay? Next, Sajawat. Sajawat means what? Decoration. Sajawat, decoration. Another word for Sajawat is Saundarya, Shobha. Okay? Sajawat, Saundarya, Shobha. And next Anand. Anand means what? Happy, fun. Okay? Another word for Anand in Hindi is Maza. Then Swagat. Swagat means what? Welcome. Another word in Hindi for Swagat is Adar Satkar. Adar Satkar. Next, Kitanu. Kitanu means what? Disease causing germs. See, another word in Hindi for Kitanu is Rog Janak. Rog Janak. Rog Janak. Vastra. Vastra means clothes. Another word in Hindi for Vastra is Poshak. What? Poshak. Next, Bazar. Bazar means market. Another word for Bazar in Hindi, Haat. Next, Vanvas. Vanvas means what? Residing in a forest. One में रहना. That's it. Vanvas, one में रहना means residing in a forest. Next, Prabhav. Prabhav means effect. Another word for Prabhav in Hindi is Asar. Okay? Pradushan. What we say for Pradushan in English? Pollution. Another word for Pradushan in Hindi? Sandushan. What we call? Sandushan. See once again. Tyohar, Parv, उत्सव, सजावट, सौंदर्य, शोभा, आनंद, मजा, स्वागत, आदर सत्कार, कीटाणु, रोगजनक. नेक्स्ट, वस्त्र, पोशाक, बाजार, हाट, वनवास, वन में रहना, प्रभाव, असर, प्रदूषण, संदूषण. Understood, my children? Now open page number 27. Yes. दादाजी, यह बताओ यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? प्रतीक. इस दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी महाराज दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे. श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या आए थे. उस रात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए
थे। See here, दादाजी is asking to प्रतीक, यह बताओ यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? What he is asking Dadaji to Pratik, why we celebrate the Deepavali festival? What is the reason for celebrating Deepavali festival? Now Pratik replying, इस दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी महाराज दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। सी इस दिन मीन्स ऑन दैट डे लक्ष्मण और श्री राम, लक्ष्मण और सीता, ओके, श्री राम, लक्ष्मण एंड सीता, सीता जी महाराज दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। सी वनवास means you know that residing in a forest. Here Sri Ram's father, who was the father of Sri Ram, Dashrath. Okay. Dashrath gave the order to Sri Ram to stay in forest 14 years. So on that day, Sri Ram, Lakshman and Sita completed their 14 years vanvasa, and they are coming to the Ayodhya, means they are returned from the forest after their vanvasa. And Sri Ram killed the Ravana. Okay, after the finishing of the vanvas, Sri Ram, Lakshman and Sita, they are returned into the Ayodhya. श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या आए थे। श्री राम killed Ravana and he returned to the Ayodhya. उस रात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए थे। See, this is the very happiest moment, no? So that's why the people of Ayodhya, what they are doing? See, that day they were welcome to the Sri Ram, Sita and Lakshman by lighting the ghee lamps. Okay, they are that's why they are celebrating the like as Deepavali festival. See, on the day Sri Ram, Lakshman and Sita, they were completed their vanvas. The order of Sri Ram's father Dashratha, and the Sri Ram killed the Ravana and they returned to Ayodhya. For this happiest moment, all the people of Ayodhya, they were welcoming to Lakshman, Sita and Lakshman, Sri Ram by lighting the ghee lamps. So, for that purpose, we celebrate the Deepavali festival every year. Like that, Pratik replied to his grandfather. Then, दादाजी, सो तो ठीक है, पर यह बताओ इस त्योहार पर घरों की सफाई क्यों की जाती है? ओके प्रतीक, यू सेड करेक्ट. To welcome Sri Ram, Lakshman and Sita, the people of Ayodhya, they were lighting the lamps, ghee lamps. What that? Welcoming to them. But we also clean our houses, no? Why we clean our house? Why we paint our house? Why we clean our house? What is the reason? Dadaji asked to Pratika. Actually, children, Dadaji know that. Just he simply asking to the Pratika. What he will reply? For curiosity, Dadaji asking the questions to the Pratika. यह त्योहार वर्षों ऋतु के बाद आता है. वर्ष ऋतु के बाद आता है. बरसात में घर गंदे हो जाते हैं. बरसात में अनेक प्रकार के कीट पनप जाते हैं. कुछ कीट बीमारियां फैलाते हैं. अतः गंदगी और इन कीटों के कारण बीमारियां फैलने का डर रहता है. इसलिए त्योहार पर घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाता है.
सी व्हाट प्रतीक रिप्लाई टू दादाजी, यह त्योहार वर्षा ऋतु के बाद आता है, आफ्टर द वर्षा ऋतु. वर्षा ऋतु मीन्स children rainy season. Varsha means rain. Okay, Varsha Rutu. See, this Tyohar, this Deepavali festival falls after the Varsha Rutu, rainy season. बरसात में घर गंदे हो जाती है. So very cold, no? So that's why the houses are what that they are looking dirty because of the raining. So बरसात में अनेक प्रकार की कीट पनप जाते हैं. See, बरसात में means in rainy season so many कीट means germs. Okay, कीटाणु, this is causing germs. See, so many types of germs flourish on that rainy season. So in rainy season, so many different types of कीटाणु means this is making germs flourish. So for that purpose we clean our houses. बरसात में अनेक प्रकार के कीट पनप जाते हैं. पनप means flourish or grow. Okay, panap. Panap means flourish or grow. See, because of rainy season, it's very cold, no, wet, so for that reason, so many कीटाणु means germs. This is making germs will flourish or grow. That's why we clean our houses. He said. कुछ कीट बीमारियां फैलाते हैं. They make the diseases. These germs makes the diseases and they spread the diseases. अतः गंदगी और इन कीटों के कारण बीमारियां फैलाने का डर रहता है. And the diseases will spread to one to other. So for that purpose we clean our houses. He said. Then इसलिए इस त्योहार पर घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाते हैं. That's why we give the very importance to clean our houses. दादाजी, शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया. See, दादाजी what said to the Pratik? Good, you gave the correct answer. प्रतीक, दादाजी एक बात पूछो, यह बताइए कि दिवाली पर पटाखे क्यों छोड़े जाते हैं. नो द प्रतीक इज आस्किंग क्वेश्चन टू दादाजी. वही दादाजी एक बात पूछो, यह बताइए कि दिवाली पर पटाखे क्यों छोड़े जाते हैं. वही वी आर पोस्ट द क्रैकर्स. ओके, प्रतीक सी हाउ इज आस्किंग क्वेश्चन टू हिज दादाजी. दादाजी टेल मी why we burst the crackers. Okay, we clean our houses, we buy so many things and we decorated houses and we cook so many different types of sweets. Okay, we make the new dresses, we light the so many lamps. Okay, all things are okay, they have the reason. But why we burst the crackers? Like that Pratik asked to Dadaji. See children, you also recently celebrated the Deepavali festival. Yes, no children? Last week you celebrated the festival. This festival, no children? See, I think children, you have only lighted the lamps, I think. You didn't burst the crackers, no children? Yes. See children, see bursting of crackers makes the noise pollution. Isn't it, no children? Air pollution. Isn't it, no children? So here that's what Pratik is asking to the Dadaji. See, bursting of cracker is also a part of this festival. Then why we burst the crackers? Why we burst the crackers means patake. Like that Pratik asking to Dadaji. For that Dadaji will give the correct answer, children. What is the answer? What is the reason? I will explain in the next class, children. Okay. See, now I will read the lesson, children. Observe your textbook. Children, while reading, observe the spellings and pronunciations. Okay? Yes. दादाजी,
यह बताओ यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। प्रतीक। इस दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी महाराज दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। श्री राम जी दुष्ट रावण को मारकर अयोध्या आए थे। उस रात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर घी के दीपक जलाए थे। दादाजी, सो तो ठीक है, पर यह बताओ इस त्योहार पर घरों की सफाई क्यों की जाती है। सफाई मीन्स क्लीन। ओके चिल्ड्रन, सफाई, सफाई मीन्स क्लीन। प्रतीक। यह त्योहार वर्ष ऋतु के बाद आता है। बरसात में घर गंदे हो जाते हैं। बरसात में अनेक प्रकार के कीट पनप जाते हैं। कुछ कीट बीमारियां फैलाते हैं। अतः गंदगी और इन कीटों के कारण बीमारियां फैलाने का डर रहता है। इसलिए इस त्योहार पर घरों की सफाई पर ध्यान दिया जाता है। दादाजी, शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया। प्रतीक। दादाजी, एक बात पूछो, यह बताइए कि दिवाली पर पटाखे क्यों छोड़े जाते हैं। I hope children can really understood the lesson, children. So the remaining part of the lesson I am doing the next class. Okay, thank you.